Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is short vowel words and long vowel words. इनको हम डिफाइन करेंगे कि शॉर्ट वॉवल कौन से होते हैं और लॉन्ग वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं. अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कंसोनेंट्स के हवाले से सारा किया था. अभी हम उसी तरह ही वॉवल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्टली मौजूद है ऑर्डिनरी वर्ड. और सबसे ख़ास बात इस वीडियो में ये है कि हम इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से इन साउंड्स को डिस्कस करेंगे कि वॉवल साउंड्स फोनेटिकली किस तरह से ट्रांसक्राइब किए जाते हैं. हम एक ऑर्डिनरी वर्ड को भी डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसी वर्ड के साथ हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी डिस्कस करेंगे. अब ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है क्या? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट मींस IPA. इसको मैं मज़ीद अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आप लोग डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ. अभी जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि लर्निंग द इंग्लिश साउंड्स, it is absolutely necessary to use a script such as the International Phonetic Alphabet, in which each symbol represents one and only one sound. तो यहाँ पे हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से हमारी शॉर्ट वॉवल साउंड्स होती हैं. In the first we have the word book. In the word book, you can see that double O sound we have. इस sound को book. Next we have cook, foot, wood. Phonetic transcription में this symbol is used for short vowel sound. This symbol. You can clearly see the symbol for short vowel sound for double O sound. Book, cook, foot, wood. Now we have example of a paragraph about short vowel sounds. In this paragraph we have different words which have short vowel sounds. Now we read the paragraph. Saad was reading a book. His cook was preparing the dinner. Suddenly he started crying. Saad ran to help him. He had hurt his foot. Saad asked him to sit on a piece of wood and brought him medicine. Now you can see the use of short vowel sounds. Short vowels we have in the word book, cook, foot and wood. Now we have long vowel words means oo sound. अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. ऑर्डिनरी वर्ड्स भी हैं और साथ ही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है. फर्स्ट वर्ड इज moon. The second one is tool. The third one is broom. Fourth one is spoon. And the fifth one is food. All these words have oo sound, means double O sound. This is called long vowel sound and its symbol is, you can see that oo. इसको हम इन slanting lines के अंदर डिस्क्राइब करते होते हैं हमेशा. प्रीवियस में हम आपको ये डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन सिंबल्स को हमेशा, फोनेटिक सिंबल्स को हमेशा स्लैंटिंग लाइंस के अंदर ही लिखा जाता है. वो जब हम फोनेटिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला तो उसमें मैं आपको डिटेल में ये सारा बता दूंगी. अभी जस्ट हम लॉन्ग वॉवल वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं. लॉन्ग वॉवल साउंड्स को ऊ साउंड है
तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन जस्ट हमने इधर डिस्क्राइब की है और ट्रांसक्राइब भी कर दी है साथ। मून का आप देख लीजिए कि डबल ओ साउंड को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ट्रांसक्राइब किया गया। टूल में डबल ओ या ऊ साउंड को किस तरह से ट्रांसक्राइब किया गया है। ब्रूम में भी आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी इन द वर्ड स्पून वी हैव ट्रांसक्राइब्ड ऊ साउंड, and in the food we have double O sound. We have described the double O sound in this way. Now you can see that short vowel sound transcription symbol, this one is, and long vowel sound transcription symbol is this. Now you can see all these two symbols. Now we have example of a paragraph about the double O means oo sound, means long vowel words. Ali was coloring the picture of moon, tools, broom, spoon and food. His mother told him to work carefully. He obeyed his mother. Now you can see we have different words which have double O sound, means long vowel words. Moon, M double O N moon. Tools, T double O L S tools. Broom, B R double O M broom. Spoon, S P double O N spoon. And we have the word food, F double O D food. You can see oo sound, double O word sound. So in this video we have discussed about the short vowel sounds and long vowel sounds. Double O के साथ भी हमने long vowel sound को डिस्कस किया है और डबल ओ के साथ ही हमने शॉर्ट वॉवेल साउंड को भी डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।